I strongly say that people like you should be advocating this entire thing. Else बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं. So someone who has understood science at an educational level and is also passionate about this field, you bring a perfect blend. Tell me more about your journey कि इन सब की शुरुआत कैसे हुई, कि कैसे डॉक्टर लांबा डॉक्टर बनी, और क्वांटम में पीएचडी कौन करता है, इतनी पढ़ाई कौन करता है, क्यों किया आपने इतनी पढ़ाई? मुझे भी इसका जवाब नहीं है, बट आई ओनली नो वन थिंग. माई चाइल्डहुड ट्रॉमा, ओके, सबके पास ट्रॉमा होता है. मदर फादर वूंड्स होते हैं. वी ग्रो अप इन अ फैमिली दैट वाज अनसेफ इमोशनली, राइट? वी ऑल गो थ्रू दैट. And when I was understanding human psychology, I understood there are 3 types of wounds that a child go through. Number 1 is the childhood neglect, childhood abandonment, and childhood abuse in the immediate environment. मेरा था childhood neglect. Okay. Right? And जब मैं 14 साल की थी, neglect means, I'm not saying my parents never loved me, they loved me a lot, but emotionally they were never present. या फिर आपको ऐसा लगा? मुझे मेरा एक्सपीरियंस था, ठीक है, निग्लेक्ट. उसका सबसे बड़ा गिफ्ट, बिकॉज इन व्हेन आई वाज डूइंग माय शैडो वर्क with Debbie Ford is the pioneer with the shadow work on the planet. She told me, Ramon, every dark shadow has a gift. तो तुम्हारे neglect का gift क्या है? I looked, and this was when I was 24 years old. मैंने ध्यान से देखा that the best gift of my childhood wound and trauma was I never left from my soul and I never came out. I never became someone else. मैं अंदर ही थी, को बाहर की वर्ल्ड मुझे अनसेफ लगती थी इमोशनली, तो मैं अंदर ही थी अपने सोल के साथ ही. नॉर्मली क्या होता है, वी आर बॉर्न connected to our soul, but as we become 21 years old and our brain matures, it takes 21 years for our brain to fully develop. Okay. That's why we call 21 as an adult. We move away from our soul and we become our ego personality. What is ego? Ego is edging God out. Soul is God. Ego is edging God out. It's a wall that comes between you and that God inside you, your soul part. Okay, the Atma, which is a part of the Param Atma. Okay. मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट यही था कि मुझे बाहर निग्लेक्ट इतना था कि मैंने अपने सोल को छोड़ा ही नहीं. I never came out. And at the age of 14, I had this realization. जब मैं देखती थी लोगों को लड़ते हुए झगड़ते हुए, आई वॉज कॉन्स्टेंटली मेकिंग पीस विद देम. यार प्यार करो, हग करो, यू नो, माई सिबलिंग्स, माई पेरेंट्स. इट नेवर फेल्ट राइट फॉर मी दैट हम लड़ने नहीं आए, यहाँ पे प्यार करने आए हैं. एंड आई स्टिल रिमेंबर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स 15, 16, 17 कि मुझे कुछ करना है. ऐसे लगता था कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी दुनिया को हील करना. उस टाइम पे यू नो जुनून था. And at that time, I came across this book called Seven Spiritual by Deepak Chopra, Seven Spiritual Laws for Success. It was one of my first books, and मैंने देखा यार इसने PhD किया क्वांटम फिजिक्स में. And the moment and उस टाइम पे कहाँ हमारे पास वाईफाई, लैपटॉप या ये सब नहीं होता, बट जो थोड़ा बहुत बुक्स पढ़े उनके समझ आया he's a PhD in quantum physics. It very well resonated with me because as a child, I grew up as a clairvoyant. I could see energies. Like जैसे आप बैठे हो ना, I can scan your energy and tell you कि आपके अंदर इतना मैटर है, इतनी एनर्जी, इतना गुस्सा है, इतना बड़ा राउंड ब्लॉक गुस्से का, इतना फियर है, ट्रैप्ड है. So I could feel all of that. It felt very normal to me. And when I would share it with my sisters and my friends, they called me mad. कि ऐसे थोड़ी होता है. मुझे एक वर्ल्ड पूरी दिखती थी of energy. I could not see solidity in the walls. I could see the atoms and the molecules. तो ये बहुत ही एक्साइट कर गया मुझे क्वांटम फिजिक्स. एंड आई रियलाइज एक ट्रुथ है क्वांटम फिजिक्स में जो हमारे वेदास में, हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है. क्या? ऑल आवर थियोरीज आर देयर. All these are truths. It's nothing but that is science and this is spirituality. By the time I was 20, 21, I'd already done the interpretation of the Gita, the Quran. I grew up I studied in a Christian school, so Bible तो था ही उधर. Right? हमारे Guru Granth Sahib made a lot of meaning to me. And when you understand the world of matter, okay, it is made up of the 5 elements. Matter is made up of, if you look at it from a physics perspective, atoms, molecules,
electrons, protons, neutrons. But when I look at it from another perspective, matter is solid, nothing but air, space, fire, water, all these elements put together. You create solidity. इधर हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में पावन गुरु, पानी, पिता, माता, धरत, महत. So everywhere the evidence was everything is made up of the same stuff. Where is the difference? खाली perception में difference है. And that is when I was sitting with my guru once at 21, and we were just talking. ऐसे ही बात चल रही है. And I said, I want to change the world. He's saying, कोई तेरी सुनेगा नहीं. अगर if you want to change the world, first come to a place of authority. Become someone. Who are you right now? Who's going to listen to you? ठीक है, तुम्हारे दिल में है सब बातें, but कौन सुनेगा? So you'll have to first work on yourself, because a wounded person can't heal someone. And that made a lot of sense. And I started my journey into self-healing at the age of 23. And side by side. And उस time पे healing कहाँ available थी?